Hey viewers, you're watching The Savera and I'm Vidhi Joshi. The Supreme Court on Monday, that is today, heard petitions challenging the Uttar Pradesh government's move to take over the management of Vrindavan's historic Sri Banke Bihari temple through a newly promulgated ordinance. The matter was taken up by a bench of Justices Suryakant and Joy Malia Bagchi, who raised serious questions about the process and intent behind the Sri Banke Bihari Ji Temple Trust Ordinance 2025. Notably, the ordinance passed by the state government proposes to hand over control of the temple's administration to a government-appointed trust, replacing the long-standing system managed by the members of the Goswami families and the local Braj community. Senior advocate Shyam Diwan, appearing for the petitioners, argued that the temple is a private religious institution with a deep-rooted traditional management system. He emphasized that for over a century, a committee elected every 3 years has handled all the matters of the temple, with the last such elections held in 2016. According to Diwan, the state's move undermines both religious autonomy and the right to manage religious affairs under Article 26 of the Constitution. Justice Suryakant, however, questioned the classification of the temple as a private institution, stating that a place visited by lakhs of devotees cannot be termed private. While acknowledging that the management may be private, the court firmly stated that the deity and temple itself hold public religious significance. The bench observed that temple funds should not enrich individuals but must be used for the benefit of devotees and for the temple's development. The petitioners raised particular concern about the Supreme Court's May 15 judgment, in which permission was granted to the state government to use temple funds for a corridor development project. Diwan argued that the directions in that case were passed without hearing the temple's managing parties, and that the application was filed in a private civil dispute unrelated to the temple's broader administration. The bench took note of this and expressed disapproval of the manner in which the state had secured the court's permission behind the back of the traditional management. Justice Kant questioned how such orders could be justified without issuing a public notice or hearing any recognized representative of the temple. He asked whether a civil judge or court-appointed receiver had been informed, adding that the state's move to intervene in a dispute unrelated to the temple governance was procedurally unfair. The court remarked that if the state truly intended to acquire land or fund development projects, it should have done so lawfully through compensation and due process, not through a clandestine application. To ensure that the temple continues functioning smoothly while legal questions are resolved, the court proposed the formation of an interim management committee headed by a retired High Court or senior district judge. This body would oversee daily operations such as crowd control, infrastructure upgrades, and safety. The court was clear that all the religious duties and rituals would continue to be conducted by Goswami families, preserving the sanctity of the temple's traditions. It also suggested that local officials such as the district collector and the Archaeological Survey of India could be included in the committee to ensure holistic development. The bench clarified that it was not ruling on the constitutional validity of the ordinance at this stage and directed that the Allahabad High Court would hear the matter. In the meantime, the court encouraged all the parties to mediate and explore solutions that respect both tradition and the need for modern management. Justice Kant even invoked the spirit of Lord Krishna as the first mediator, urging the stakeholders to engage in dialogue. The hearing was adjourned to Tuesday, that is August 5, tomorrow at 10:30 a.m. to give the additional solicitor general time to obtain instructions from the state government on the court's proposals. आज सुप्रीम कोर्ट ने दो मैटर्स सुने, जो एक थी मिसलेनियस एप्लीकेशन और एक थी रिट पिटिशन जिसमें ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था। जो एमए थी मिसलेनियस एप्लीकेशन, वो कि एक 15 मई का जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उसके कुछ डायरेक्शंस थे जो टेम्पल को डायरेक्टली अफेक्ट करते, उसके रिकॉल के लिए वो एप्लीकेशन फाइल हुई थी। और उसी ऑर्डर के बाद सब्सिक्वेंटली 10 दिन बाद स्टेट ने ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करी थी। तो जो आज का मैटर था वो स्टार्ट हुआ था मिसलेनियस एप्लीकेशन से, जिसमें हमने कोर्ट को यही बोला कि कुछ डायरेक्शंस हैं जो कि हमें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, क्योंकि उन डायरेक्शंस में डायरेक्टली ये चीज लिखी हुई है कि स्टेट के जो फंड्स हैं टू द अमाउंट ऑफ 262 CR
टू एक्वायर 5 acres ऑफ लैंड, वो स्टेट के फंड्स गवर्नमेंट स्टेट ऑफ यूपी यूज कर सकता है। तो हमारा ये सबमिशन था आज कोर्ट के सामने कि विदाउट अस बीइंग अ पार्टी, हमें ना तो गोस्वामी की कोई कमिटी को नॉलेज थी, ना तो टेम्पल थ्रू सिविल जज को इस मैटर के बारे में कोई भी नॉलेज थी, और ये ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का पास हुआ ये विदाउट आर नॉलेज हुआ, बिहाइंड आर बैक हुआ। सो दिस ऑब्जर्वेशन शुड बी रिकॉल्ड। दिस वाज द मेन प्रेयर इन द एमए, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने काफी डिटेल्ड हियरिंग दी, और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची के सामने मैटर कोर्ट 2 में था जो आज सुना गया। सेकेंड जो चीज थी ऑर्डिनेंस, वो भी आज आर्ग्यू इसलिए हुई क्योंकि दोनों अब इंटरकनेक्टेड हो गए, और उस ऑर्डिनेंस का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के लास्ट एमए के ऑर्डर में भी था, इसलिए ऑर्डिनेंस में भी आज आर्ग्यूमेंट्स हुए। और उसमें हमने ये बताया कि ऑर्डिनेंस में कुछ चीजें, क्या पूरा ऑर्डिनेंस ही ऐसा है कि इट टेक्स अवे ऑल द पावर फ्रॉम द गोस्वामीज एंड गिव इट टू द स्टेट, और हमारा जो टेम्पल है वो एंशियंट, उसमें ऐसे ऐसे रिचुअल्स हैं जो सालों से चले आ रहे हैं, और स्टेट थ्रू दिस ऑर्डिनेंस इज टेकिंग अवे एवरीथिंग फ्रॉम द गोस्वामीज, फ्रॉम द टेम्पल। तो इसके लिए ये रिट पिटिशन थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड हियरिंग करी, उसके बाद ओरली जजेस ने कुछ सजेशंस दिए, और वो सजेशंस में ये भी इंक्लूडेड था कि एक हाईकोर्ट जज को अपॉइंट किया जाए टू ओवरव्यू थिंग्स, और ये चीजें कल डिस्कशन डिटेल में होगा। उन्होंने सारी पार्टीज को एक 1-pager नोट और सजेशन सबमिट करने के लिए बोला है, और कि उसमें क्या ऐसा हो सकता है विच इज ऑफ कोर्स हेल्पफुल टू एवरीवन। तो कल वो मैटर 10:30 AM दे हैव लिस्टेड अगेन, एंड एज एन इंटरिम मेजर ये सजेशंस विच फेल फ्रॉम द बेंच विल बी कंसिडर्ड टुमारो। मैम, कोर्ट ने ये भी इंडिकेट किया कि इस मैटर को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज सकते हैं, तो चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे डिवोटीज आते हैं, तो इस पूरे इशू को अब क्या किस तरह से सेटल होगा, आप बता सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करी जा रही है, पूरे टेम्पल के बारे में, और जो कि हिस्टोरिकली जो डिसेंडेंट्स हैं हरिदास जी, जिनके, और इफ वी गो इनटू द हिस्ट्री, उन्हीं के डिसेंडेंट्स सारे गोस्वामी लोग हैं जो टेम्पल चलाते आ रहे हैं। तो और बहुत सारा लिटिगेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है जो ऑर्डिनेंस डायरेक्टली अफेक्ट करता है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वो बहुत क्रूशियल होगा हाई कोर्ट लिटिगेशंस पर भी। तो जो आज कोर्ट ने बोला, ओरली ये भी ऑब्जर्व करा कि जो स्टेट का कंडक्ट था इन टर्म्स ऑफ कमिंग इन अ प्राइवेट लिटिगेशन, और जो 5 acres लैंड वाला जो पिछला ऑर्डर था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न ओरली आज सजेस्ट करा है। सो आई थिंक टुमारो जो सजेशंस फॉल होंगे हमारी तरफ से भी, बेंच विल कंसिडर ऑल ऑफ दैट एंड देन दे विल टेक अ कॉल। That's all for now. Stay tuned to the Savera for more updates. Do like, comment and subscribe to the channel.